To join them on the panel, to join her on the panel, can I please have on stage Major Dr. Ashlesha Tawde-Kelkar, Professor, Community Medicine, Rural and Tribal Health, MGM Medical College and Hospital. To join them on the panel, can I now have Nighat Abbas? She is a lawyer and social activist. Let's also have on stage Dr. Surbhi Singh, founder and president, Sachhi, Saheli. So yet another all-women's panel, and trust me, I am super excited for this one for the next 30 minutes because this looks like this is gonna be a rocking, power-packed panel discussion, and this is a breakaway session where we are going to deliberate upon healthy menstruation role of medical practitioners. Ladies and gentlemen, it is now over to the panel head, Dr. Sania Siddiqui. Thank you so much. A very good afternoon to everyone. I think we are running a bit late with our sessions, but no worries. This one is going to be a rocking one, Surbhi, I'm sure. Okay. To begin with, our gorgeous presenter has already introduced me. I'm Dr. Sania Siddiqui. I run this foundation by the name Humjoli Foundation. We are based out of Pune, Maharashtra. The tagline of my work, I would say, is periods sharm nahi, shamta hai. Do you agree? Is it a superpower? Yes, exactly. So that's where our work begins. So I'll share a small incident, not a full-fledged story, how we started working in Humjoli Foundation. So because the panel discussion is about medical practitioners' role in menstruation, healthy menstruation. So being a doctor, during my practice and for so many years, I used to come across a lot of women who used to bring their daughters to me and बोलते थे कि मैडम इसको आप थोड़ा periods के बारे में बता दीजिए. So exactly एक चीज़ हुई 2017 में. So this mother came to me, an urban educated woman. She came along with her 11-year-old daughter and she said, ma'am, please guide my daughter. She's about to begin with her period and I want you to explain to her what's going to happen. I was, पहले बहुत बार ये सुना था, but still, I told her, of course I will tell her, but you being the mother, the closest person to your daughter, you're the best person to explain this to her. Why you haven't done it? She said, I don't find myself comfortable speaking about this. And more importantly, what she said is, I don't have the right words. I don't want to scare her. It involves blood. I don't want to scare my daughter. So I want a proper, professionally trained educator to explain this to her. And that's when I decided, just imagine, this woman is an educated person. She works in an MNC. Still, she's not finding the right and appropriate words to explain what is going to happen to her daughter. Now you imagine what is the state or status in the rural areas, where mothers or nobody is speaking to the young girls about what is going to happen, how they have to manage it. It's all about hush-hush there. And that's when I thought, let me put it together in a very organized way and start imparting awareness and education, more specifically in the rural and suburban areas. And that's how Humjoli was founded in 2018 somewhere. Since then, me and my team, we are working. So basically, there are a couple of things that we do under the organization. We impart awareness sessions in anywhere, any area where we get a set of audiences. It could be a basti, jhuggi, labor camp, a corporate, boys, men, anyone and everyone. We have 10 different modules to cater to different audiences. Then we have our kits, period hygiene kits. So we believe that it's not only about distributing, going out in the ground and distributing just packets and packets of sanitary pads. It doesn't help. You have to take care of menstruation 360 degrees. And that's why our period kits are, they contain new undergarments, enough number of pads, biodegradable mostly, and soap and disposal bags. Now, disposal has been a huge issue, so we take care of disposal as well and disposal bags separately. Then we have certification course and allotment activities that we do. So this was a bit about
the work we do. But today's discussion in this panel is about the role of medical practitioners in healthy menstruation. Before we get into the medical part of it, because we have two doctors with us and we have a social activist with us. So first, let's hear from her what her experience has been. So I would like to invite Ms. Nighat Abbas. She's BJP's spokesperson and a social activist, and she'll elaborate more about her work. Good afternoon, everyone. It's amazing to be here, and thanks to the organization, Gramalya, Damodranji, Manavji, Mansiji, Preetiji, and Geetaji, for having all of us here. I've been here since a couple of hours, and I've been listening to all the doctors here and all the intellectual speakers. They're amazing. I must tell you, you all need a great, great round of applause. So first, a round of applause to all of them. It's an amazing panel, and right in front of me, I see an amazing person sitting in front of me, Maninderji. A lot of you might not know him, but the way he has been working, he's an industrialist. He also runs an NGO. He's been working. He's obviously surrounded by women. I mean, not like Krishnji, but he has lots of sisters, including me one. He has a wife. He has a beautiful daughter, and meri beti bhi ab aapi ki beti hai, because you are a mama ji to him. Apart from that, I know him and I respect him for what he's doing. The way he respects women and the way he is also working for the menstrual hygiene, it's commendable. A great, great round of applause for him also, please. Thank you so much. Okay, so today we are here speaking about the menstrual hygiene. I'm not that technical as doctors are, but I just want to keep my point of view in front of all the people. Menstrual hygiene, that is what we are talking about here. Once again, I mean, firstly, I'd like to say that it breaks my heart and kind of disappoints me that we have to organize a program like this where we have to create awareness about menstrual hygiene. I mean, high time. Isn't it too basic for all of us to already know about menstrual hygiene and practice it? I mean, just imagine that tomorrow Damodranji and Manavji organizing an event like this to create awareness about how men should shave his beard. I mean, imagine. Or maybe how men should create or have that kind of hygiene down there. Just imagine. They won't. Why? Because our ancestors have left us with this silly education that the blood a menstruation gives is very, very impure. However, the reality is that the blood, the source of blood the menstruation gives is the only source of blood which is not traumatically induced in a woman's body. It is the most hidden, never spoken of, and never seen apart from the women who privately see in a washroom. That's the harsh reality. Anyways, so we need to talk about the reality now. I'll just tell you one example. In central Uganda, somewhere in central Uganda, you know, even today, there are different kinds of myths over menstruation. So they are told, I mean, it's very important, it's a very informative thing you all should know, that they are told that if a dog smells a woman's stained sanitary napkin or a towel, the woman would go barren. I mean, imagine a dog having such supernatural powers कि एक औरत को बांझी बना देते हैं. Imagine that kind of trauma a woman is going through. Also, this is no less. I have to tell you more. I mean, I know a few of us would be menstruating right now. So girls, be prepared. You might just walk out being pregnant out of this hall. Because a lot of countries says, people in a lot of countries says, that if you are a 13 or a 14-year-old and you get menstruation, and if you talk to an unknown boy or a man, you might get pregnant. So imagine coming into this hall, a virgin, and walking out with a womb. That's so funny. I mean, just talking to a man could make you pregnant because you are menstruating. That is the kind of mentality and that is the kind of thought process we still have in this modern era. We need to change this. We really, really need to change this. This is the worst part
that menstruation even today is a taboo. However, I also want to say there are two segments. There are two kind of segments of people. One, who are telling that do not go to the temple, achar mat khao, do not eat, do not sleep with us, do not do anything when you are menstruating because you are impure. Just tell them that we aren't. There's another segment who are like, tomorrow if any girl who's single or married, your husband or boyfriend is telling you, I mean, first segment वाले लोगों के बारे में पहले मैं एक चीज बताती हूँ. The first segment tells you that you're impure. Tell those people and tell that women especially that if I am impure, tomorrow would you allow your son, your brother to get married to a woman who is very, very pure, not menstruating at all, ever? It's नहीं यार, बच्चा कैसे होगा? That's the kind of dual-faced they are. Again, the second segment, ये भी बड़ा मजेदार segment है. The segment of people who tell their wives, their partners, kuchiku, baby shona and all of that when you're menstruating, they want to take care of you and all of that nonsense. Stop that bullshit. We don't need that. What we need is for you to tell us that we respect you. You are allowed to do anything you want to do even in those 5 days of menstruation. And third, you're pure. And most importantly, we want all the men out here in the world, in every place, to tell us that we survive because you bleed. You should always be grateful. Because we bleed, that's the reason the world survives. Those 5 days are that important. So tomorrow, if you feel ever that somebody is talking to you like that, just tell them that I'm not a girl, I'm a hatchet. I'm not a fool, I am a survivor. I'm not a hole. I'm not a hole, I'm a whole mountain. I am not a shy girl. I am a razor, a straight razor. Give them back and stand for yourself. If today you do not know anything about menstruation, or you do not know about the sanitary napkins, the reusable pads, and many more information, you need to learn and let people learn. Stop shying away. And I really want to give a big round of applause for Vinodji, who was speaking so relentlessly about menstrual hygiene. He gave a shout out that who is menstruating, and I don't know, somebody here raised the hand. A big round of applause for both of them. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, Nigat. Those were some really powerful words, and I really appreciate that. Of course, we are not ghee, कि purity or impurity important hai. Okay, so moving ahead, now we have Dr. Surbhi Singh with us. She is a gynecologist and founder and director, president of Sachhi Saheli. She is a wonderful person, and I know her for some time. She's a brilliant social mobilizer. इनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं, जैसे कि पैड यात्रा, माहवारी भोज, और इस तरीके के ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ करती हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं. तो आज हम इनसे भी कुछ इनके इनपुट्स लेना चाहेंगे. सबसे पहले डॉक्टर सुरभि, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स भी हैं, हम उस तरह समझ रहे हैं. तो अगर किसी को समझाना है कि पीरियड्स क्या होता है, बेसिक, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जार्गन्स आपके अलग है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन एक सिंपल भाषा में बताना है बच्चे को या एक लड़की को या किसी माँ को कि आप कैसे बताएं, आप कैसे बताएंगे कि पीरियड्स क्यों होते हैं और क्या होते हैं? थैंक यू सो मच. मैं भी एक बार खड़े होकर थोड़ा ज़्यादा जोश में आती हूँ. तो जैसे कि अभी इंट्रोड्यूस किया था, मेरी एनजीओ है सच्ची सहेली, जो 2016 से मैंने काम शुरू किया था. एंड सबसे पहली जो टफ सिचुएशन थी ये कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे कॉमन मैन से कनेक्ट होना है, तो वो डिस्टेंस कैसे मतलब कम किया जाए जिससे कि वो मेरी बात समझे. अदरवाइज़ क्या होता है ना, ये तो डॉक्टर है, इनके लिए तो आसान है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है. तो वो जो एक प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहली बात ये समझ में आई कि कनेक्ट. मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है. एज ए डॉक्टर एक बात मुझे सच्ची में रियलाइज़ हुई कि अगर मुझे अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जानना है कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो मुझे आज भी लॉयर करना पड़ता है. अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. क्यों?
क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? क्या मेरी एजुकेशन में ये पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े? मगर प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स बात नहीं करते। उन्हीं पेरेंट्स के घर से वो लेडीज़ या फीमेल्स या मेल्स भी आते हैं जो टीचर बन जाते हैं, वो भी बात नहीं करते। तो कहीं से वो शुरू हो ही नहीं रहा है। तो उस साइकिल को ब्रेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से शुरू हो जाए, कि क्या हो रहा है। साइंस जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं फ्रॉग का डिसेक्शन कर रही हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी बॉडी में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये मुझे समझ में आ जाए। तो जैसे भी निगत ने बोला, मैं मेरी जो बताने का तरीका होता है हमेशा बहुत स्टोरी बेस्ड होता है। हमेशा अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि जैसे मैं उनसे बोलती हूँ कि जब मेरे पास कोई लेडी आती है और बोलती है कि मेरे को 15 डेज ओवर हो गया है और मेरे को अल्ट्रासाउंड करके देखना होता है, तो मेरा पहला होता है ओके, हार्ट बीट दिखाई दे रही है, इसका मतलब बेबी अलाइव है। कहाँ से आई है हार्ट बीट? क्या मतलब है इस हार्ट बीट का? इसका मतलब ये है कि मदर से बेबी की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। पूरे 9 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं होते। वो इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है? वो पहली धड़कन जो मुझे दिखाई दी थी अल्ट्रासाउंड में, जो कई बार नहीं भी दिखाई दी, वो हो रही है। वो पहली हार्ट बीट कहाँ से आ रही है? उसी इम्प्योर ब्लड से आ रही है जिसको जब प्रेगनेंसी नहीं होती और वो ब्लड बाहर आता है, जिसको मैं इम्प्योर कहती हूँ, वही इम्प्योर ब्लड पहली बार जब उस बच्चे के अंदर आता है, आत्मा आई है, पूजा हो रही है, नई जिंदगी आई है, जिसके बारे में हम ऐसी बातें करते हैं, वही ब्लड जब बाहर आ जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है। अगर ये ब्लड इम्प्योर है तो दुनिया में एक इंसान बता दो जो प्योर है, जो आसमान से रस्सी से लटक के आया था, जो अपनी मदर के अंदर से नहीं आया था। कोई है एक इंसान जो प्योर है? अगर ये ब्लड इम्प्योर है तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई प्योर है ही नहीं। या तो ये बात हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी आर ऑल आर इम्प्योर, या फिर इस ब्लड की प्योरिटी पे सवाल उठाना बंद कर दें। तो ये बात सबसे पहले अपने आप से पूछने की है। अगर खुद पे ये भरोसा है कि मैं प्योर हूँ तो फिर इस ब्लड पे सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई पंडित, कोई मैं बोलूँ मौलवी या कोई भी फादर, कोई आसमान से रस्सी मैंने आज तक तो नहीं देखी कोई आ गई और सीधे उतर के आ गया और बिना इस ब्लड को यूज़ किए, तो ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले जो ये सवाल उठाते हैं वो अपने आप से पूछ लें, पहली बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर। एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि इसमें कुछ छूट जाता है। अगर किसी ने मतलब डे बनाया मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया के सर्कमस्टांसेस में हेल्थ और अवेयरनेस पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या है मेंस्ट्रुअल हेल्थ? एक बच्चे को, एक फीमेल को ये पता हो कि राइट एज क्या है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की और मेंस्ट्रुएशन खत्म होने की, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का पार्ट है। कितने दिन की ब्लीडिंग साइकिल नॉर्मल है, कितने दिन की ब्लीडिंग नॉर्मल है, कितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ है। कैसे काउंट करो मेरी साइकिल नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ का पार्ट है। क्या इंटरमिट जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, मेरी साथ जो हो रहा है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मैं अपनी बॉडी में होने वाले हर चेंज को जान जाऊँ, समझ जाऊँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के सिनेरियो में। अवेयरनेस मतलब चेंज इन एटीट्यूड। मेरा मेंस्ट्रुएशन को लेके एटीट्यूड क्या है? जैसे उन्होंने बोला कि ना मुझे बहुत पैम्पर करने की ज़रूरत है, ना इसके बाद ये आंखें नीची करके शर्म करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज मेंस्ट्रुएशन को लेके एटीट्यूड चेंज होना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड, नॉलेज एंड देन फाइनली चेंज इन प्रैक्टिसेस। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तब मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ और अवेयरनेस की पार्ट को अचीव करती हूँ। सच्ची सहेली ने, हमने पिछले 2017 से हमने एक डे मनाना शुरू किया था 5th ऑफ फरवरी को। 5th ऑफ फरवरी क्यों? क्योंकि 28 डेज़ का एक ही मंथ होता है जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल से सिमुलेट करता है, और 5 डेज़ की एवरेज ब्लीडिंग। तो मैं कहती हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाएं, क्योंकि जर्मनी ने शुरू किया, उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बहुत ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूरज ही तब निकलता है, बहुत सारी चीज़ें उनको फेवर करती हैं। बट इंडिया में सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन से काम नहीं चलेगा कि पैड कैसे लगाना है, पैड कैसे डिस्पोज करना है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्स हमारे मिथ्स और ये सारी चीज़ें हमारे रिचुअल्स हैं कि हम इससे का। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड अवेयरनेस डे, इसके बारे में प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज, सिर्फ यूट्यूब पे कोई 4 वीडियो या इंस्टा पे कोई 4 दिखाने से नहीं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ डिजीज़ आ जाए या कुछ एबनॉर्मल हो जाए वहाँ से शुरू नहीं होता। किसी को ये बताना भी हमारा काम है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कि ये एबनॉर्मल है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कौन बताएगा किसी फीमेल को कि जो आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसमें क्या सिम्टम है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब ये फिजियोलॉजिकल है और कब ये पैथोलॉजिकल है? कौन बताएगा पेन्स में, मेंस्ट्रुअल पेन में आपको मेडिसिन खानी है कि नहीं खानी है? कौन बताएगा कि पीएमएस जो है कि ये फिजियोलॉजिकल है या आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? ये हमारा काम है, हमें करना है और करना ही चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम सब
इस तरह के समिट में जो बैठे हैं, मुझे लगता है जितने भी मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हैं सबके पास कुछ ना कुछ होता है अपना एक फील्ड एक्सपीरियंस के अलावा बताने के लिए अपने एरिया से। तो इसका मैंने आज दामोदरन सर से भी बात की थी कि इसका एक जो जीस्ट हम तैयार करते हैं कि क्या सीखा यहाँ से, उसकी एक पूरी बुकलेट बना के, ताकि हम एक दूसरे से सीख पाएँ। एंड एज ए डॉक्टर हमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे बहुत सारा काम करके बहुत सारी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि जो भी आप काम करें वो कंप्लीट हो। खाली हम अगर सोचते हैं कि हम पैड डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ मिथ्स ब्रेक करके आ जाए, उसके ऊपर ये बताना भी इंपॉर्टेंट है क्या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। कुछ लोग नॉर्मल साइकिल में डर रहे होते हैं कि यार मेरे को तो महीने में 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं। 22 डेज की साइकिल है तो नॉर्मल है, ऐसा कितनी बार होगा कि जब आपको महीने में 2 बार पीरियड्स आएंगे, बट वो डरा बैठा है मेरे को क्या हो गया, मैं बीमार तो नहीं हूँ। एक बंदा बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, अच्छा है यार साल में जितने कमाए अच्छा है। तो हमें ये पता ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाना कब है, वो नॉर्मल है परेशान है, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो रहा, उसको राइट नॉलेज मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए प्रैक्टिशनर भी और एज ए मेंस्ट्रुअल एजुकेटर भी कि राइट नॉलेज राइट टाइम पे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसी को लेकर जो मेरी जो जितनी भी होते हैं कि कहानियाँ और जो मिथ बस्टिंग होती है कि वो हमेशा कभी जब भी हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो एक बात याद रखनी है कि किसी को गलत साबित करने हम नहीं जा रहे हैं, किसी को खराब बताने हम नहीं जा रहे हैं। हम बस आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय का इस टाइम और सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। एक समय था जब बहुत सारी चीज़ें जो आज गलत लगती है वो समय सही रही होंगी, शायद उस सर्कमस्टांसेस में वही बेस्ट रहा होगा, बट समय बदलता है, उसके साथ हमें कितना बदल रहे हैं हम सिर्फ वहाँ उनको हाथ पकड़ कर लेके आना चाहते हैं। अगर हम ये सोच के जाते हैं हमें ज़्यादा नॉलेज है और तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। जब तक आप सामने वाले को ये कॉन्फिडेंस नहीं दोगे कि आप जो कर रहे हो ठीक है, बट क्या इसमें थोड़ा सा बदलाव करें जिससे कि हमारी नॉलेज से हम उसको हल्का सा ऐसे कर दे तो और बेटर नहीं हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं करते तो लोग सुनेंगे जरूर पर बदलेंगे नहीं, वो पीछे से बोलेंगे इनकी तो दुनिया ही अलग है, हमारी दुनिया में ऐसे नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम उनको अपने लेवल पे या हम उनके लेवल पे जाएं, उनको भी समझे कि वो ऐसा बिलीव क्यों रखते हैं, कोई तो रीज़न रहा होगा, जानने की कोशिश करें, उसके बाद उसको पे बदलने पे काम करें। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, मे बी सबके लिए करता होगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Surbhi. That was really insightful. But still, my question remains unanswered. Please tell me in a very precise way how to explain what is a period or what is menstruation to maybe a 12-year-old, if you have to, because I know you're very good in telling stories. Okay, so when it comes to how to tell a student, जैसे 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि पहले ये वर्ड समझाने की कोशिश करती हूँ कि पीरियड का मतलब क्या होता है। कोई हिंदी इंग्लिश मैथ्स का पीरियड है, ऐसा ये कौन सा पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहले मैं उसको बताती हूँ कि पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस एक रिपीटेडली हो रहा है और एक रेगुलर इंटरवल पे होता है अप्रॉक्सीमेट, उसको पीरियड कहते हैं। जिस तरह से क्लासेस एक रेगुलर इंटरवल पे होती हैं और रिपीटेडली होती हैं, उसी तरह से तो एक साइकिल जहाँ मेंटेन होती है उसको हम पीरियड कहते हैं। तो पहले ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसका नाम क्यों रखा है पीरियड, फिर ये फीमेल्स में ही क्यों होता है, लड़कों में क्यों नहीं, तो किस एज पे शुरू होता है, इसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो मैं हमेशा उनको एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी अगर हमें कोई, मैं जो बोलती हूँ कि कभी हमें कोई पौधा लगाना है तो हम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ सीड्स देती हूँ और बोलती हूँ कि जाके इसको पेड़ बना के अगल को मुझे लेकर आना, और इसमें मुझे या कुछ दिन बाद मुझे एक पेड़ चाहिए। तो क्या करोगे, बॉटल को फ्रिज में बंद करके रख दोगे या हवा में उछाल दोगे, जा पेड़ बन जा, कैसे होगा। तो वो बोलते हैं कि हमें उसको हमेशा सॉइल में डालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तब वो जाके पेड़ बनेगा। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे इंसानों को भी एक पावर मिली है कि वो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस कर सके, उसके लिए उसके अंदर भी एक सॉइल है जिसका नाम हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस सॉइल में ग्रो करके नया इंसान आता है इस दुनिया में। वो जो सॉइल है जिसमें कि हम उनको समझाते हैं कि मतलब हमारे पास यूट्रस का मॉडल होता है और बताते हैं कि यहाँ से एग निकलेगा और यहाँ पहुँचेगा अल्टीमेटली, लेकिन ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन से वाले बीज को अंदर डालना है और कौन सा वाला बीज इम्परफेक्ट है। जो फर्टिलाइज हो जाता है वो बीज परफेक्ट है, उसको वो अपने अंदर इम्प्लांट करती है। और ये जो हम फर्टिलाइजर और फूड की बात करें, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये मदर का वो ब्लड, जो बेस्ट ब्लड उस सॉइल ने अपने अंदर दबा रखा हुआ था कि जब भी यहाँ पर मेरे पास कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी इसको ग्रो करने की, तो वो ब्लड मैं यूज़ करूँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो यूट्रस है एंडोमेट्रियम, बच्चों को बताने के लिए कि ये वो माँ है जो अपने बच्चों को बासी खाना नहीं देती। हर महीने नया ब्लड और नई मेम्ब्रेन वहाँ आती है जिसमें जाके वो ब्लड इम्प्लांट होता है
और अगर वो इम्प्लांट नहीं होता है तो ये माँ कहती है कोई बात नहीं, अगली बार जब आएगा उस आने वाले के लिए इसको निकाल देते हैं। यूट्रस मेहनत करता है, जैसे कोई प्लास्टिक की बॉटल होती है, उसको बार बार स्क्वीज करते हो आप पूरी तरह खाली करने की, यूट्रस के हाथ नहीं कि वो जाके मेम्ब्रेन हटा दे और नई मेम्ब्रेन लगा दे। तो एक प्रोसेस है जिसमें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसमें पेट और बैक की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है पेट में और बैक में, और वो मेम्ब्रेन धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलने से कुछ समय पहले बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी को पता लग जाता है कि बेबी नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ विड्रॉल्स होने लगते हैं। इसकी वजह से हमें पीएमएस फील होता है, दूसरे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो बाद में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मेम्ब्रेन बाहर निकल जाती है। जो मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती, जो मिक्सचर होता है मेम्ब्रेन और ब्लड का, जो आने वाले बच्चे के लिए रखा हुआ था, वो मिक्सचर हम अपने पैड पे देखते हैं, जिसको हम पीरियड्स ब्लड या पीरियड कहते हैं। और यही अगर यूज़ हो जाता है तो इसमें बेबी ग्रो करता है, जैसे कि आप नया प्लांट मेरे पास लेकर आते हैं जिसको आपने अच्छे से सींचा होता है। तो बेस्ट ब्लड रखती है ये माँ, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है, सबसे अच्छा ब्लड अपने बच्चे के लिए बचा के रखती है और कभी उसको बासी दूध नहीं देती है, इसलिए हर बार इसका बाहर निकलना ज़रूरी होता है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे आई यूज टू टेल माई स्टूडेंट्स। Wonderful, wonderful, Dr. Surbhi. Extremely interesting and informative way of explaining this complex concept. Now I would like to include my panelist, who's Dr. Ashlesha Tawde-Kelkar. She is a professor at MGM College of Rural and Tribal Medicine. Welcome, doctor. And I think you want to add on to something what Dr. Surbhi said, and then we'll take your question forward. Do you have your mic? Yes, actually, I would like to add to the word period. Word period is also called Ritu in Sanskrit. So Ritu has two connotations: Ritu, Ma, Mahavari, Mas. In Sanskrit, we use this, and it also denotes period as in menstruation. So. When we say Ritu, the way Madam Dr. Surbhi mentioned, Ritu, that comes periodically. And the word ritual in English, that has also come from Ritu in Sanskrit. So yes, this, the way Madam mentioned, Dr. Surbhi, it comes periodically, and it comes at a regular interval. Also, this menstrual cycle is typically of 28 days. Menstruation, the word menstruation has come from Greek word. Mensus, or is to do with the Greek word menes, which is related with moon and also with men. It is again related with moon, the phases of moon, and it is also they say that the phases, how moon is associated with high and low tide, the women's emotions, the women's body, and the levels of hormones are also linked and associated with the phases of moon. And that is how they, it is also proven, and there is literature related to this. The pineal body is also associated and is also affected by the phases of moon, and that is how in ancient times, when there were no artificial lights and external influences, where the menstrual cycle was calculated, was also calculated as well as influenced by the phases of moon, and that is why this 28 days. And nowadays, of course, things have changed, and external factors, external stressors, external influences, including the mobile, artificial lights while sleeping, etc., influence our menstruation, menstrual cycle, flows, etc. But yes, the menstruation, menstrual flow, menstrual bleeding, all is, of course, related to these things. Yes. Thank you, Dr. Ashlesha. I have another question for you. Since you work extensively with the tribal women and in rural areas, what is the difference that you find in terms of as a medical practitioner that you come across working in those areas, and specifically in tribal areas? Right. I prefer that. First, thank the organizers, the Gramalaya,
Damodar sir, Preeti madam, Geeta madam, and everybody who's associated with Gramalaya, because they are doing a fantastic, fantastic job, not only menstrual health management, menstrual hygiene and health management, but also related to wash. And I'm extremely fortunate, and I thank with whole of my heart to invite me here today for this panel and in this program, in this summit, because being here itself, I feel empowered. Sarve santu niramaya, sarve sukhina santu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukha bhat bhavet. This is the soul of sustainable development goals. No one should be left behind. Everything is revolving around this. So this is no new to us. Even menstrual health is not one. Sustainable development goal, not one goal. Goal 3 is health. Goal 4 is education. Goal 5 is, I think, gender. Goal 6 is water. There are multiple goals in those 17 goals which are revolving around this one center. The 17th goal itself, which is partnership for achieving these goals, is unachievable unless we come together and bring together these all goals. So yes, when I am working in tribal area around menstrual hygiene, I did not start with menstrual hygiene ever. I started with water and sanitation because that is fundamental to any human. Before that, it is not doctor, it is major before doctor. So major, as I was in armed forces before I started in public health full-fledged. So as we all know, in the border areas, army is the only armed forces medical doctors are the only doctors many places who look after the border villages and ladies there. So I was posted in places where there were no doctors, forget lady doctors. In miles and miles of radius, there was no lady, forget lady doctors. So when they knew that in a particular unit, there is a lady who has come, they used to get their wives or whoever, daughter, etc., just to show me. I remember one incident where they got a woman covered in 2-3 blankets. It is around 0-degree temperature. This area is around Surankot, if anybody knows that area. It is beyond Punch, LOC, in Jammu and Kashmir. Punch, then ahead of that is Surankot, small place. You can even now check out on Google Maps. Beyond Surankot is Loran, small place. And beyond that was a post where I was posted. No lady officer, forget any lady doctor, whatever. Away from my family, I was sulking because I couldn't get leave, etc., away from my family. But my nursing assistant, he said, "Madam, there are some patients who have come from local villages." I said, "Abhi dekhna hai, bahut thand hai." I'm sitting, like right now we are sitting very cozy in this hall, outside very cold. I'm sitting with Bukhari. We don't have heaters, etc. We have coals, etc. there. Not much. Everything is ad hoc. We are on in the barracks, in the mountains, etc. We are in the eye of the enemy. So some of the villagers have come to see you. I said, "Is it necessary?" Said they came across 2 or 3 mountains probably. I said, "Okay." I went out. I saw there was a khatiya, jante hain hum khatiya, baj. So it is made with this rope, khatiya pe. 2, 3, 4 blankets are there. I said, "Where is the woman?" Inside the blanket.
So underneath that blanket, this woman is there. I said, remove the blanket. No, cannot remove the blanket. She is not wearing anything under that blanket. Khatia is all open with the ropes it is made. Na? From underneath, it is all open. From above, she should not feel cold, so blankets are put. So I have to examine her. She is laden with infections of perineal area. Not shown to any. I said, what is wrong with you guys? She'll die of septicemia. Said, no lady doctor around. Can't show to a male doctor. No, can't show the body to a male doctor. There is no lady doctor available. Luckily, you are here. So we got her from 2 or 3 mountains across. The habitation is there. Small habitation, Gujjar. They are always on the move. They don't stay in one place. Laden with infection and not want to show to a male doctor because body kaise dikhayenge male doctor ko. I saw, what can I do? I was a young doctor, 26 years, just posted there by chance. I shuddered that time. Not because of the cold. It was laden, pustules, pus coming out, just because of unhygienic menstrual practices. Unhygienic menstrual practices. Bad clothes used for whatever cloth they were using, not cleaning, not keeping hygiene, not maintaining, multiple pregnancies, maintaining pregnancies at home, abortions, everything. So it is not one problem at a time for women that they have to suffer. So really, when we are taking up this issue, sir, when you are doing this, by giving us this platform, you are in real sense empowering us multiple fold, and I really, really want to thank you from the bottom of my heart. A great, great applause for you. I cannot thank you enough. Me standing here or each woman sitting here, I still remember that woman. I gave her some medicine. I said, I evacuate you to this general hospital, this, that. There are right now, I'm sitting with these ministry. There are 6 by 6 by 6. There are policies which are made by the government. But reaching these policies, taking these policies to the grassroots level is the job, and that you are doing, sir, and that each one of us, I think many of us who are entrepreneurs here, who are NGOs here, are doing with their heart and soul, and which I really, really appreciate. And I thank you, each one of you. Now, there are 3 things which I expect as a medical practitioner from myself and each one of us. Like Madam said, it is awareness. Yes. Then there is, so awareness is there, then there is practice, right? So awareness and action. For whom? So there is Asha. There are 3 elements in the village. Asha, Anganwadi, and 3rd element is I, or mother. Asha, Anganwadi, and mother. Mother as in family. Mother is the center, but the whole family. As a medical practitioner, what I do is I counsel the entire family, and not just counsel as in pakad ke daantna nahi hai. I see what they do, why they do so, and why not. So there are some good practices, what they do which is good, and what they do which is not good. Whatever is good, we have to build upon that. Whatever is existing knowledge, we have to build upon that. Same thing for wash also we do.
Even for open air defecation, we started the way we started. Whatever is existing knowledge, we cannot scrap it completely. It is very difficult to penetrate in such areas the knowledge that is coming from ancient times. Ancient times, in ancient India, if we go back, it is never said that the period blood is impure or period time is bad time. Rajaswala is the word. Rajaswala is the word which means woman. Wala is woman. Rajas, somebody with lot of emotion. So the woman which is on high emotion and high level of moving, something like that. Draupadi was a Rajaswala when she was called in the assembly during the Dyut. It is never called impure. She is asked, she is requested to take rest for 4 days. It's extremely clearly given in ancient India. She's supposed to be taking rest, and very, very authentically. Each day, her rituals are given very clearly. Even if we follow it to the point, we are very, very good. But we don't. We have to build on whatever is existing knowledge, rather than scrapping it. The next thing is, this is medical, next is education. So bringing it in our curriculums, right from school till our medical colleges. Our medical students do not emphasize much on the importance of menstrual knowledge, just like how Dr. Surbhi said, or Dr. Sania mentioned, the right words. We are not taught to counsel a daughter or an adolescent girl or an adolescent child to know about adolescent problems. There are adolescent clinics. We have chapters on adolescent health. But what are the simplest words that will connect? So including this in curriculums of medical colleges is important. Not just MBBS, but also Ayush practitioners. We have many Ayush practitioners in our country. So in all Ayush practitioners' curriculums, we should include menstrual hygiene or menstrual health management. That is another thing. And use of technology. Best use of technology. Today, adolescents are very well versed with technology. Making small videos which can easily connect with them, that they can see in their privacy. Everything is in the, let's not say tip of their tongue, but at the palm, at the comfort of their palm. We can very easily use the technology for this. We are making apps, we are making videos, but making them more content-rich, making them more connecting, and making them more internationally appealing is something that we should do. So I think we are reaching there, and we are reaching far larger population. At the same time, we should reach even to our pockets of tribes. We should try to make the same kind of technology in our local dialects. So I would request people to come forth in making such smaller videos, smaller content in local dialects. We don't have that kind of content. So that, I think, is something that is required. Natu aham kamaye rajyam, na sukham na apunarbhavam, kamaye dukkha taptanam praninam arti nashanam. We don't really want any of the riches, or we don't need any of the, let's say, politics or anything. All we require is
to alienate or alleviate the pains of those who are in pain. That's our motto. Wonderful, with this. wonderful, Dr. Thank you. Ashlesha. Dhanyavad. Thank you Jai Hind. so much. And the story you shared about the woman, that was really dreadful, and I wish and hope no other woman has to go through that because of poor menstrual health and hygiene. Now, I think we are running, as usually, short of time. I have very quick one question with Dr. Surbhi. I know she has to be really quick. What are the 5 key takeaways you want to give to the audience over here to have good menstrual health and hygiene? Very quick one. Okay. Yes, Signal. सो आई थिंक 5 अगर मैं बोलती हूँ कि बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि इस पे कि जैसे हम लोग ने एक इनोवेटिव वो शुरू किया था 5P पाउच, कैरिंग 5P पाउच, ऑल 5 थिंग्स विद स्टार्टिंग विद P, जैसे आपने उसमें बताया कि हम लोग ने शुरू किया था ये कि पैड, एक पैंटी, एक पेपर सोप, एक रफ पेपर एंड अ पेपर बैग जिसमें हम अपना यूज पैंटी को रख सके. तो अगर हर लड़की ये रखना शुरू कर दे अपने पास, हर फीमेल ये रखना शुरू कर दे अपने पास, तो पीरियड्स जो डर है ना वो शायद नहीं होगा. हम एक छोटा सा एक वो रखते हैं कि जो पहली बार पीरियड से इंट्रोडक्शन होता है ना, हमेशा क्या होता है कि सब हर्ष में बात करते हैं और एक भूत हमारे कंधे पे बिठा दिया जाता है जो हमेशा याद दिलाता है किसी को पता ना चल जाए, और हम पूरी जिंदगी उस भूत के साथ इशारों पे नाचते हैं. तो पहली बात है कि उठा के उस भूत को पटक दो जमीन पे, बस. Right. अब पता चलने दो, अब पता चलने दो, पीरियड्स नेचुरल है, नॉर्मल है. और ये जो पहली बात है कि अपना एटीट्यूड जो हमें उसके लिए चेंज करना है, जिसके लिए हम एक रेड स्पॉट कैंपेन 5 फरवरी को करते भी हैं कि रात हाथ पे लगाकर और विद पावर के साथ हम करते हैं कि अब पता चलने दो. तो सबसे पहली बात इस भूत को उठा के पटक दो और बता दो कि कुछ गलत और कुछ गंदा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ कुछ नहीं है, Right. यहाँ सब नॉर्मल है. तो पहली बात कि, और दूसरी बात जो बेसिक नॉलेज है ना, जो हम पहले से शुरू करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें पता होंगी. जैसे पहली बार जब मुझे पीरियड्स आए तो एज़ यूजुअल सबके साथ वो एक बड़ा सा झटका लगा, ये क्या हो गया, कैंसर तो नहीं, ये वो, और मम्मी को जाके बताया तो उन्होंने बस एक कपड़ा ला के पकड़ा दिया, कुछ नहीं, सबको होता है. तो मतलब ये शॉक की तरह से नहीं आए, ये पार्ट ऑफ लाइफ हो, ताकि हर जो, जैसे कि हम सभी लोग कर रहे हैं कि हर बच्चे को किसी की ज़िंदगी में, मतलब आज 25-30 साल हो चुके इस बात को, आज भी ज़िंदगी में शॉक जैसा ही आता है, आज भी बच्चे डर जाते हैं. तो ये नॉलेज जो है उस लेवल पे स्टार्ट हो जाए कि कभी भी झटका ना लगे, है ना, वो जो नॉर्मल वे में स्टार्ट हो. पहले दिन से उसे, जब उसे पीरियड्स नहीं आए तब से उसे पता हो कि पैड कैसे लगाना है, कैसे डिस्पोज करना है, कितने घंटे में पैड बदलना ज़रूरी है. लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि अगर जब तक गंदा नहीं हो रहा तब तक बदलो. 6 to 8 आवर्स में पैड को बदलना बहुत ज़रूरी है. इवन इफ उस पर कोई स्टेन नहीं आया तब भी ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया उस पर कल्चर करने लगता है, ग्रो करने लगते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक नॉलेज जो रोज में काम आती है वो होनी चाहिए. तीसरी बात, बॉयज़ जिनसे हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनको तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, उनको तो समझना ही चाहिए, बट उनको बताया किसने, क्या मम्मी ने समझाया, क्या टीचर ने, क्या सिस्टर ने, क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने, किसने बताया उसको? बात कोई नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन सब पाल लेते हैं. लड़के कैसे बिहेव करते हैं ना, कैसे मजाक बनाते हैं ना, उनकी नॉलेज का सोर्स क्या है? उनके जैसे पीयर जो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तुझे इतना भी नहीं पता. अबे तो वो लोग पहले उनको बताया जाए, फिर उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाए. मैंने देखा है बच्चे, लड़के बदलना चाहते हैं और बदलते हैं. ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने काम किया है जहाँ पे लड़के मजाक बनाते थे, किशोरियों जहाँ जब पैड मिलता था, क्या मिला जरा हमें भी तो दिखाओ, बाग छीन छीन के करते थे. उन स्कूल्स में लड़कों ने लाइन लगा के लड़कियों को पैड्स बांधे, रेस्पेक्टफुली बांटे. तो थर्ड चीज़ है कि खाली लड़कियों से काम नहीं चलेगा, इस पे काम करना पड़ेगा. फोर्थ चीज़ है, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन पे बात अगर हम करेंगे तो नहीं होगा, हमें एडोलेसेंट हेल्थ को साथ में लेके चलना पड़ेगा. सिर्फ लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं, लड़कों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है. वाइट डिस्चार्ज उनको भी हो रहा है, उनको भी नाइट फॉल होता है, मैस्टरबेशन वो भी समझना चाहते हैं कि नॉर्मल है, अब नॉर्मल है. अभी तो बड़े बड़े से बोर्ड लगे होते हैं ना कि मर्दाना ताकत पाए और ये वाली चीज़ें छुटकारा पाए. अरे भाई नॉर्मल है, फिजियोलॉजी है, उसमें क्या, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा तो लड़के बेचारे भी भटक रहे हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी में. तो एडोलेसेंट हेल्थ का पार्ट होना चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियों को बराबर में बिठा के, अभी लगता है कि सिर्फ लड़कियां शर्माती हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक है जहां लड़के भी बात नहीं करते हैं. तो इसका इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ. एंड साथ में फीमेल्स को
हम सिर्फ लड़कियों की बात करें, अभी तक जितनी बात होती है मेनार्क से रिलेटेड होती है, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेनोपॉज को भी इसमें लेके चलने की ज़रूरत है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। वो महिलाएं जिनको नहीं पता है कि मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या मेरे को मेनोपॉज होने वाला है, हो गया है, राइट एज है कि नहीं है, सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, इसको भी इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। Perfect. Thank you, Dr. Surbhi. Very well defined. Just to sum it up, what she has said, the 5 takeaways from this panel are going to be: normalize menstruation, education and awareness on MHM, inclusion of men and boys, and adolescent health. That's very important to take care of that. And also talk about menopause and menstrual disorders. So thank you so much for that. And I have one last quick question with Ms. Nighat. Have you changed? Have you seen a change in the mindset when you go in the community? She's a social activist, and when you go in the community, have you seen? इतने सालों से बात कर रहे हैं MHM के बारे में, अब इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, कहीं कुछ शिफ्ट दिखता है? Thank you, Sania ji. I really think when I go and meet people, because Pan India, we work for the menstrual hygiene also, we work for the upliftment of the women and a lot of education things and all of that. I see at some places, at some point in time, I see a difference, but at a lot of places, I still see the same taboo. Importantly, what I see, and which again disheartens me a lot, is that a blood coming out of vagina, when it is caused by a man taking virginity, is often celebrated and sometimes also shown off. In some communities, it is a fact. I mean, I am sure some of you must be aware of it. However, when it's a menstrual cycle, when it's a biological process, it's hidden. So that is the kind of inclusion we need, that people need to come as a community, as a family, come forward and take charge of it to change. Because I'd like to, I'll just take a quick 30 seconds. That when even I was a child, I was in 5th standard, one of my friends got periods for the first time. Probably the first girl in our class, and we didn't know anything about it. I myself, and I carry that guilt even today. All of us started ignoring her. We didn't want to sit with her, we didn't want to play with her, we didn't want to eat with her. That's because our parents had already taught us that it is impure. So that is the kind of thing we're still carrying. I'm talking about years back, but even today I see a lot of people doing that. Like Surbhi ji just mentioned, that a lot of girls, when they bleed for the first time, they feel it's blood cancer. That's so sad. I mean, so traumatic for a girl to just go, take a piss, feel it's bloody, and then come out and feel, oh my God, mujhe to blood cancer ho gaya. That is so sad. It is not the reality. Again, one more thing, that the moment you feel, the moment you get your menstruation for the first time, you're called as a औरत. मतलब अभी तुम 13 साल की बच्ची थी, कन्या थी, तुम्हें पूजा जाता था, बाहर आती तुम औरत हो गए. So that is the kind of thing and mentality we are carrying. We need to bring in change as, communities and families getting and talking about this subject. अगर पिता के साथ अल्कोहल लेना बहुत नॉर्मल है और कॉमन है, बहुत फैमिलीज में करते हैं, then why this health issue is not being addressed? We should address this all inclusive. Thank you. Totally agree. Thank you so much. Thank you so much. And I would really like to thank once again Dr. Ashlesha, Ms. Nighat, and Dr. Surbhi for this wonderful panel discussion. Thanks for all your time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okay, so thank you so much. With this, we come to the end of this breakaway session. Thank you so much for this wonderful inputs. I would now invite Dr. Radhika Nayak to please felicitate our panel head and the panel members. दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात आज यहाँ इस ब्रेकअवे सेशन में डिस्कस हुई है कि पीरियड्स शर्म नहीं क्षमता है, and we're so thankful to all of you for bringing up such a thought-provoking panel discussion. I would request Dr. Sania Siddiqui to please step forward. After this, I would request Major Dr. Ashlesha Tawde-Kelkar to please step forward for the felicitation. I would now request Ms. Nighat Abbas to please step forward.
And last but not the least, I would request Dr. Surbhi Singh to please step forward for the felicitation. So this was one discussion that we all were so engrossed in that we didn't realize that we're running out of time and it is lunchtime. So